So Bhagavad Gita is the divine song of God, and we are here to improve our life, to better our life by the application of the concepts of Bhagavad Gita in our life. Definitely, it's our life manual, and it teaches us how we can be happy in our life. Next, Srila Prabhupada wrote not only Bhagavad Gita but also so many scriptures on the basis of the concepts of Bhagavad Gita. 70 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं श्रील प्रभुपाद ने। इतना कुछ श्रील प्रभुपाद के पास था ह्यूमैनिटी के साथ शेयर करने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट सो दीज आर द एजेंडास व्हाट एवरीवन ऑफ अस आर लुकिंग फॉर इन आवर लाइफ ना, क्या हमारी आवश्यकताएं हैं, आध्यात्मिक जीवन की क्या वो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और किस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड भगवद गीता का और प्रैक्टिकल टिप ऑफ द डे दैट कैन मेक आवर लाइफ हैप्पी। नेक्स्ट सो ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, चाहे छोटे बच्चे से पूछा जाए कि बड़े बच्चे से पूछा जाए, चाहे बिजनेसमैन से पूछा जाए कि किसी टीचर से पूछा जाए कि स्टूडेंट से पूछा जाए, व्हाट एवरीवन ऑफ अस आर लुकिंग इन आवर लाइफ इज हैप्पीनेस, and we find different ways and means to be happy. Next, छोटे आप इस काम कीजिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि स्लो स्लो मूव हो रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा या बिकॉज अदरवाइज लाइक द फ्लो विल गेट डिस्टर्ब्ड. So these are the ways we see, like from childhood to youth to old age, people find different ways and means to be happy. है ना? Next. Different people in the different modes of material nature. हाँ, आइडेंटिफाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस. मैं साउथ अफ्रीका गया था, वहां पे मुझे हर थोड़ी दूर पे एक सैलून मिलता था. Why? Because people are crazy after their hair styles. नेक्स्ट 2012 की बात बता रहा हूँ. So next some these are the passionate ways of identifying happiness in one's life. Sports, Bollywood, Hollywood, Tollywood, so many areas people explore in just pursuance of some happiness. Different means people identify to be happy. Next. Yeah, this is an important slide because this shows the different categories of needs we have. So, see, like in this session, I'm just going to share something which we already know, but in a way that will make us understand the importance of like the Bhagavad Gita in our life. Like we have physical needs, we have psychological needs, and we have emotional needs. No one can deny with this. Physical needs definitely are very important, which includes food, water, shelter, sleep, health, sleep. Sleep ही व्यक्ति की डिस्टर्ब हो जाए तो कितने प्रकार के डिजीज हो जाते हैं. स्ट्रेस जनरेट होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिगड़ते हैं, डायबिटीज लेवल्स बिगड़ते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है. साइकोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, अचीवमेंट, कॉम्पिटेंस, autonomy, identity. Definitely we need it. And emotional need, love, to be loved, uh, belonging, connection, intimacy, appreciation, empathy. People want that others should at least listen to them. People want that others can understand them. Like in a survey, it was found that so many people all over the world are feeling this, are having this problem of loneliness. They just think that no one cares for them, no one understands them, no one looks after them, and they just feel a lot of loneliness. Even in the metro cities like Mumbai and Delhi, even the youths, uh, so many, 1 out of 10, as per one of the data which I have seen, is having symptoms of depression in their life. So somewhere or other, the medical science is improving, the technological advancement is improving, but this one aspect, especially uh, emotional need, this is getting even neglected day after day. You will find that uh,
say 100 years before, 200 years before, people used to have very less physical facilities as we have now. हाँ, अब जैसे गर्मी के समय में नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इवन कूलर। 100 साल पहले बात करें, 150 साल पहले बात करें तो and now like even a middle class person having AC in their like in their homes. So physical जो suffering उसको तो हमने काफी अच्छे से counteract किया है, but still people person's happiness index is not increasing the way it should increase because we are neglecting one basic aspect, basic fundamental identity, which we'll discuss further. Next. Yeah, so this is the quote by Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON. Every one of us are searching after happiness, but we do not know what real happiness is. We see so much advertised about happiness, but practically speaking, we see so few people happy. This is because of this is because so few people know that the platform of real happiness is beyond the temporary things. It is this real happiness that is described in Bhagavad Gita by Lord Krishna to Arjuna. Next. So here I take a pause. So see, like the basic fundamental understanding in any aspect is most important. तो श्रीमद् भगवत गीता का इवन सेकेंड चैप्टर ही हमको बताता है कि इस प्रकार से हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो आइडेंटिटी है, वही बॉडी ना होकर के सोल है. We have the gross body, which is made of 5 elements: earth, water, fire, air, and ether. Then we have subtle body, सूक्ष्म शरीर, which is made of 3 elements: mind, intelligence, and false ego. मन, बुद्धि और अहंकार. इससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है. और उसके अंदर होती है आत्मा. आत्मा यानी हम स्वयं, है ना. सो पीपल हैव सम कंसेप्ट ऑफ सोल. थोड़ा बहुत लोगों की अंडरस्टैंडिंग रहती भी है ऐसा सोल कुछ ऐसा होता है करके, बट दे डू नॉट नो अबाउट इन डिटेल. अभी सेकेंड चैप्टर भगवत गीता का आप पढ़ेंगे, वर्स नंबर 11 से लेके वर्स नंबर 30 तक, 20 वर्सेस कृष्ण डेडिकेटेड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल, है ना. हाउ द सोल कैन नेवर बी किल्ड, इट कैन नेवर बी ड्राइड, इट इज इनसॉल्युबल. वी ऑल आर द we all are the part and parcel of the super soul, which is soul, and the soul is having the bodies as covering. And even if the person meets with death, we say that this person passed away, but the body is still there. So who passed away? We are talking about the soul which passed away. So in that way, through logic, reasoning, common sense, scripture understanding, this basic fundamental understanding will come, that how we are not this body, but this body is just the covering of the soul. और अगर मछली जो है वो पानी से बाहर निकल करके आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, तो उसके प्रयास जो है वो विफल ही होंगे, है ना. तो जैसे एक बच्चे को आप गुदगुदी गुदगुदी लगाओगे तो भी हंसेगा, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो खुश हो गया. जस्ट अ मिनट, या तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खुश हो गया. सो सिमिलरली अ पर्सन मे एंगेज हिज माइंड इन सम टेम्पररी हैप्पीनेस, बट अगेन लाइक द टेम्पररी फेज विल सून बी ओवर. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि रॉबिन विलियम्स वाज अ फेमस अमेरिकन एक्टर एंड कॉमेडियन. ही यूज्ड टू मेक पीपल लाफ बाय हिज कॉमेडी, बट अल्टीमेटली ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड इन हिज लाइफ एंड ही कमिटेड सुसाइड. अब आपके बॉलीवुड में बहुत सारे आपको लिस्ट मिल जाएगी एक्टर एक्ट्रेसेस की, है ना. जिया खान ने सुसाइड किया था, प्रत्यूषा बैनर्जी ने सुसाइड किया था. दे वर वेरी फेमस पीपल, बट somehow or other people when forget our real identity and just identify with matter, uh, then like it is like uh, and the layer of illusion is more, and we are going away from the reality. So here it's written, he had everything common world would dream of having. You know, family, friends, fans, so many fans, wealth, fame, and whatnot. I have the list of 7 to 8 IAS and IPS officers also who ended up their life committing suicide. है ना. एक तो बक्सर का जो कलेक्टर था आपका, उसकी यूपीएससी रैंक ऑल इंडिया रैंक 13 लगी थी.
So he got frustrated because of the conflict between his mother and his wife. And by making a 5 minute 9 second video and the evening before suicide, है ना, he shooted a video that अगर आप ये वीडियो में देख रहे हैं तो ये मेरे सुसाइड के पहले का वीडियो है और मैं अपने सुसाइड का जो है दोष अर्पण किसी पे नहीं करना चाहता, बस मैं जस्ट फ्रस्ट्रेटेड था मेरी वाइफ और मेरी माँ के बीच में जो तनाव चल रहा है उससे। दोनों ही मुझसे प्रेम करते हैं पर दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं और उससे मैं बहुत तनावपूर्ण स्थिति में आ गया। इतनी तनावपूर्ण स्थिति में आ गया कि एक आईएएस ऑफिसर को भी दूसरे दिन ट्रेन की पटरी में लेट करके सुसाइड करना पड़ा। तो दिस आर रियल इंसिडेंसेस, है ना। ऐसे ही एएसपी रैंक पे एक ऑफिसर था दिल्ली में, उसने भी यंग यंग ही वाज वेरी यंग, बच्चा भी छोटा था, उसने अपने आप को शूट कर लिया था। So there are so many cases of frustration, depression, and suicide is the extreme, to the extreme. So scriptures talks about mental equilibrium, and when a person do not act wisely, then he meets with mental breakdown. So how a person can become mentally strong, how the intelligence is dominating the mind, these are very important aspects. Mm. Next. So some people are better off to. There are others who seem to be better off. They engage in philanthropic, social welfare, or charitable activities. They feel it gives them satisfaction and meaning in their lives. So these are there's a talk about how one level above are people who are helping in nature and who are charitable in nature, who engages themselves into the social welfare activities. They are betterly situated, but not the best for the so, what gives them satisfaction? It calls for understanding a spiritual need. Happiness can be attained even in practicing basic aspects of spiritual tenets, selfless service, and helping others, as shown in the last picture. Being free from pride, feeling compassion for the other souls, for the other jivas. If some basic stuff can give the satisfaction and happiness, just imagine the happiness a spiritually mature person experiences. Next. तो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग वही शेयर की जा रही है कि सेल्फिशनेस जो है वो हमको बांधती चली जाती है, सेल्फलेसनेस जो है वो हमको लिबरेट करती चली जाती है। एंड अल्टीमेट सेल्फलेसनेस इज व्हेन वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद द कनेक्शन विद द गॉड एंड वी सर्व अदर्स कीपिंग गॉड एट द सेंटर, द गोल ऑफ गीता फॉर लीडर्स। Our goal is to help you understand the divine teachings of Srimad Bhagavad, which can ensure a positive, enthusiastic, forbearing, and divine consciousness even in the most difficult and trying phases of your life. See, अभी जैसे हम लोग जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस अर्जुन ने किए थे कृष्ण से, उसके आंसर्स भी दिए हैं। तो एक तो हम लोग एक क्वेश्चन आंसर्स का हमने कंपाइल किया था, एक लीफलेट बोल सकते हैं फोर साइज का, जिसमें जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं और जो भी उसके आंसर्स हैं भगवत गीता में कहाँ पर दिए हैं उसका पूरा कंपाइलेशन था उस शीट में। जैसे फॉर एग्जांपल वी फील jealousy sometimes, so where Krishna is answering about jealousy. We find anger issues where Krishna is answering about anger issues. We feel that sometimes we are unnecessarily dominated by others where Krishna is speaking about that aspect. So problems which the humans face, solutions which Krishna is giving. So that is a complete like a leaflet during Bhagavad Gita marathon time. Sometimes we give that leaflet to others just to inspire them to know that Srimad Bhagavad Gita is like a problem solving manual. We have so many problems and there are some proposed solutions by the by so many people, but what are the solutions which Srimad Bhagavad Gita is proposing? That understanding also we should have. Next. So this is like the little diagram that किस प्रकार से पांडु जो है उनको जो है श्राप लगता है और पांडु जो है वो किसी ऋषि की गलती से उनसे हत्या हो जाती है, ऋषि के माध्यम से उनको श्राप लगता है और वो
वनवास जाते हैं, और वनवास मतलब फॉरेस्ट जाते हैं वाइस के साथ में, और वहां पे उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो पुत्र युधिष्ठिर और जो जो पंच पांडव जो रहते हैं, वो सभी जो है धृतराष्ट्र की कस्टडी में जाते हैं। और धृतराष्ट्र किस प्रकार से अंधे थे, इस कारण से वो अपने वो राजा नहीं बन पाए, तो उस कारण से धृतराष्ट्र की इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र जो है वो राजा बने। तो उस वजह से वो सारी पॉलिटिक्स होती है और चीजें बिगड़ती हैं आगे। So actually, Yudhishthira was the ideal king because he was having so many wonderful qualities. But since the Dhritarashtra was elder, Pandu was, है ना, junior. But since Dhritarashtra was blind, so that's why he couldn't rule the kingdom. Therefore, he always had the desire that my son should rule the kingdom further. But since Yudhishthira was born prior to Duryodhan, so like as per the seniority again, like his hopes of making his son Duryodhana king were shattered. So that's why like there was a series of plot to kill the Pandavas, by Duryodhan, Dushasan, Shakuni and their company. Next. So there the pictures like how once उनको वैक्स हाउस में पांडवों को कुंती जी के साथ जलाने का भी प्रयास हुआ था। विदुर की चालाकी से कैसे ये लोग बच पाते हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स में तीन चार बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, जो विदुर हैं या विभीषण हैं या जामवंत हैं, रामायण में आता है जामवंत के बारे में, या उद्धव आते हैं, उद्धव Bhagavatam में. These are very very wise personalities who use their wisdom in solving the complex equations of life. और फिर ये एपिसोड तो बहुत ही खिला देने वाला था, जहाँ पे द्रौपदी was disturbed and finally Krishna comes and protects Draupadi from the vicious hands of Dushasan, the younger brother of Duryodhan. Next. सो अल्टीमेटली 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास इनको मिलता है। वो पूरा होने के बाद भी जो है दुर्योधन, दुशासन कंपनी जब मना कर देती है कि नहीं, इन लोग का तो पूरा ही नहीं हुआ है अज्ञातवास, ऐसा वैसा सारे डिटेल्स हैं। फाइनली कृष्णा पीस मैसेंजर बंद करके जाते हैं, तो कृष्ण को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। दुर्योधन वो सो एनिवियस की बोलता है कि एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। So in that situation, the war became inevitable, and ultimately, uh, both the armies were facing each other. And in middle of that, in middle of that, Arjuna and um Krishna was standing. Arjuna gets bewildered by seeing all the relatives, in front, assembled together to fight, and that's how like the conversation started. And the first verse, Dharma Kshetra, Kurukshetra, Samveta, Yusuf, Mamaka, Pandava, Sheva, Kimakurpati, Sanjaya. Dhritarashtra was saying, "Oh Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do?" अभी देखिए यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है, ये यहीं से ही पहले श्लोक से अलग अलग कर दिया कि मेरे सन और पांडु के सन, है ना। परिवार के पार्ट नहीं मान के चल रहे हैं, दोनों अलग अलग पार्टी हैं। तो यहाँ पे पहले वर्ड से ही धृतराष्ट्र ने जो है वो अपनी मेंटलिटी का प्रदर्शन किया। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते भी हैं भगवद गीता में कि धृतराष्ट्र वाज नॉट ओनली मटेरियली ब्लाइंड बट ही वाज आल्सो स्पिरिचुअली ब्लाइंड, दैट्स व्हाई ही कुडंट act responsibly, and that's why so many wrong decisions happened. You see like he was the king, जिस समय द्रौपदी को डिस्टर्ब किया जा रहा था, वो तुरंत ही भीष्म को बोलते हैं, भीष्मा प्रोटेक्ट all these things, है ना, all this adharmic activities. Immediately Bhishma would have taken action, right? Because he was serving the king Dhritarashtra. But since Dhritarashtra was so attached to Duryodhan that he couldn't gain the courage to stop the dharmic orders given by Duryodhan, Dushasan. So that shows weakness of intelligence. इससे एक लर्निंग लेसन मैं भी लेता हूँ कि जैसे many a times we also know what is right and what is wrong, but we will not be able to always adhere with right, है ना, and we may succumb to wrong despite of knowing what is wrong. Hmm. So there comes an important question that it is simple, it is easier to criticize Dhritarashtra, for his weakness in decision making, but it is difficult to criticize our weakness of intelligence when we fall prey to uh, bad decision making. Mm. So, so we should take learning lessons how
weak decision making or wrong decision making can bring calamity in our life. Life is all about decision making. आप कितनी अच्छी क्वालिटी की लाइफ व्यतीत करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि हमारी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी कितनी अच्छी है ना. एंड ऑलवेज वी हैव द चॉइस, है ना, ऑफ गोइंग फॉर अ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और फॉर अ लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस. जैसे मैं प्री डायबिटिक हूँ, तो वैसी स्थिति में कभी भी कोई आकर्षक मीठा मेरे सामने आता है तो इच्छा तो होती है खाने की, खाने से मजा भी आएगा है ना. पर खा लेता हूँ तो फिर थोड़ा सा मैं देखता हूँ एक दो दिन खाने खाने के बाद शुगर लेवल्स मेरे बढ़ जाते हैं. So in that way, it's not good for me. So although it may give some temporary satisfaction to the tongue, maybe 50 seconds, 60 seconds satisfaction, but ultimately it's not good for the body. So in the better way of satisfying the taste buds is going for those food items which are conducive for my health. क्या मैं मीठा अनार खाता हूँ तो उससे मजा नहीं आता? उससे ही मजा आता है पर उससे शुगर लेवल्स नहीं बढ़ते, है ना. क्या मीठा एप्पल खाता हूँ तो उसमें मजा नहीं आता? उससे ही मजा आता है पर उससे शुगर लेवल्स नहीं बढ़ते, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है ना, ग्लाइसेमिक लोड कम होता है. तो इन दैट वे they will always be like more than million times we have to select between short term and long term, है ना. And to the degree we become uh, wiser in our decision making, to that degree our happiness index will be directly proportional. Okay, next. अर्जुन एंड कपिल dilemma. हार्दिक जी पढ़िए. Arjun in complete dilemma. Arjun, seeing the scene of battlefield, gets into depression. It is not any Tom, Dick, or Harry's depression. A great hero who has endured and been positive in the face of unlimited trials in his life is into depression now. Let's uncover the greatest motivational talk by Lord Krishna in his Gita for leaders. Yeah, next. Next. पढ़िए पढ़िए. स यज्ञान प्रजा श्रेष्ठा पूर्ववाच प्रजापते अनेन प्रश्विष्य धवम एष वो स्तव स्थितः कामतक. In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods, along with sacrifices of Vishnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." Bhagavad Gita 3.10. Yeah. So this is the formula Krishna is sharing with us in the third chapter, 10th verse. And how a person can be happy in this world and also in the next. By the performance of yajna, that sacrifice, one will be happy in this world, and also in the next. So there's a ways and means scriptures are telling that how a living entity, how a jiva can be happy. And there's a arrangement of making oneself happy through material ways. So when a person reads scriptures, understands scriptures, he becomes more wiser to differentiate like what is correct and what is wrong. So see like जैसे मैं भी जब कॉलेज में था तो लोग बाग बहुत बहुत तेज बाइक चलाते थे, 80 90 100 की स्पीड में बाइक चलाते थे. एंड यूज्ड टू आस्क देम कि लाइक डर नहीं लगता? बोले अरे इट कॉजेस थ्रिल, है ना, स्पीड में ही तो मजा है. बट समटाइम व्हेन दे मेट विद एक्सीडेंट एंड दे हड्डी वगैरह जब टूट गया और 1 महीना जब प्लास्टर चढ़ा रहा, आफ्टर दैट दे अंडरस्टूड दैट स्पीड brings some thrill, brings some excitement, है ना, to the mind. But what if we meet with accident? So this is called as mode of passion behavior. When a person is unable to when a person is unable to see what can be the consequences and of the activity, and is just acting as per the dictations of mind.
and then lamenting later. So anytime when we make some decision making and later we have to lament, understand that that decision making was influenced by the mode of passion. And anytime when we have to pay some bitter price in the beginning, but that results in a good end, understand that it is influenced by the mode of goodness. And, so these three modes have a lot to do actually. Krishna spent three full chapters, chapter number 14, chapter number 17, chapter number 18 of Bhagavad Gita in describing the activities associated with the three modes of the material nature. मुझे सबसे पहली चीज जो भगवद गीता पढ़ करके 2007 में समझ में आई थी वो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर ही था क्योंकि मैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने जीवन में दूसरों के जीवन में देख सकता था किस प्रकार से मोड ऑफ इग्नोरेंस में भी सेम एक्टिविटी हो सकती है पैशन में भी हो सकती है और गुडनेस में भी हो सकती है जैसे से टेक द एग्जांपल ऑफ चेस्टाइजमेंट अगर कोई व्यक्ति मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वो चेस्टाइज करेगा अगर पेरेंट है अगर चाइल्ड को चेस्टाइज करेगा बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि बोलना क्या चाह रहा है क्योंकि इन मोड ऑफ इग्नोरेंस अ पर्सन वोंट हैव क्लैरिटी वो केवल अपने अपने गुस्सा निकालेगा बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि बेसिकली क्यों हमारे ऊपर गुस्सा हो रहा है इन द मोड ऑफ पैशन अ पर्सन विल लॉजिकल है ना बट ही विल हर्ट द ईगो ऑफ अदर पर्सन है ना सीनियर है तो जूनियर का ईगो हर्ट करेगा पेरेंट है तो चाइल्ड का ईगो हर्ट करेगा तो बच्चे को बात तो समझ में आएगी क्या बोल रहे हैं परंतु इस तरीके से बोला जाएगा कि ईगो ईगो हर्टिंग में तो उसको स्वीकार करने की इच्छा फिर भी नहीं होगी इन द मोड ऑफ गुडनेस इफ अ पर्सन इज सिचुएटेड इन गिविंग करेक्शन चाहे सीनियर जूनियर को दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा हो कि पेरेंट चाइल्ड को दे रहा है वो उन शब्दों का चयन करेगा ताकि जो सबॉर्डिनेट है जूनियर है चाइल्ड है वो समझे कि कहाँ उसने गलती की है और कैसे उसको सुधारने से उस व्यक्ति का ही कल्याण होगा बच्चे का ही कल्याण होगा तो एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल मैंने करेक्शन को लेकर के बताया कि हाउ इवन वाइल गिविंग करेक्शन इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है ना so mode of goodness is a very enlightening mode in which a person's quality of decision making improves. He gains various virtuous qualities like discipline, dedication, loving, caring, appreciating others' contribution, being grateful, being appreciative. So many good qualities. In the mode of passion, a person becomes very impatient and anger, lust, greed are directly influenced by the mode of passion. And in the mode of ignorance, it's basically laziness, dullness, lack of confidence, है ना? And criticizing nature, backbiting. So all these inferior qualities are influenced by the mode of ignorance. So Krishna standing in the middle of the two armies and explaining these finer aspects of life with which people have to deal with. So that's how we understand how uh, Bhagavad Gita is so practical and is dealing with the equations of our life. How the intelligence should control the mind, how not mind is should control the intelligence. माइंड का काम है प्रपोजल्स देना इंटेलिजेंस का काम है उन प्रपोजल्स को फिल्टर फिल्टर आउट करना क्या स्वीकारना है क्या नहीं स्वीकारना है इंटेलिजेंस भी कहने की छन्नी हमारी गड़बड़ हो गई तो सारा कचरा जो है वो आ जाएगा है ना सो दैट्स हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ sharpening our intelligence with the wisdom of Bhagavad Gita is important. Next, yeah, पढ़िए. कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायां यजतो मुखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तदहरि कीर्तना. Whatever result we obtain in Satyuga by meditating on Vishnu, in Treta Yuga by performing sacrifices, and in Dwapar Yuga by serving the Lord's lotus feet, can be obtained in Kali Yuga simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra. Srimad Bhagavatam 12.3.52. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हम लोग भी जब शुरुआत में थे कॉलेज डेज में इसको के संपर्क में आए थे तो ये पॉइंट बताया गया था कि जो रिजल्ट सतयुग में भगवान पे मेडिटेट करके त्रेता में सैक्रिफाइस पे परफॉर्म करके द्वापर में डीटी वर्षिप से मिलता था वही कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से मिलता है व्हाट इज हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे आज फ्राइडे है ना
फ्राइडे टू फ्राइडे हम लोग करीब 100 के आसपास यूथ को कैंपस में घुमा करके यही यही हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो करवाते हैं कीर्तन के माध्यम से। वही चल रहा है अभी बैकग्राउंड में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मषनाशनां नता प्रतरो पया सर्व विदेशो दृष्टये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। These 16 names composed of 32 syllables are the only means to counteract the evil effects of Kali Yuga. In all the Vedas, it is seen that to cross the ocean of nescience, there is no alternative to the chanting of the holy name. That is mentioned in the Kali Santran Upanishad. So there were multiple processes of achieving liberation in the different yogas, as mentioned in the previous verse, but especially when it comes to Kali Yuga, when the memory is very low, people do not have austerity, elements of austerity, people can't perform tapasya, concentration power is so weak. So in that scenario, it's especially recommended that just by taking shelter of the names of God, है ना, which is non-different from Him, one will see that uh, once negativity from the heart will disappear, है ना, it will counteract all the evil effects of Kali Yuga. So that's why in this Kali Yuga, the greatest yajna is Sankirtan yajna. And that means the congregational chanting of the holy name of Krishna, which is non-different from him. So in ISKCON, whichever center you visit or whichever ISKCON devotee you meet, you will be finding that at least he is chanting Hare Krishna Mahamantra. That one thing you will find common because this is the way of directly counteracting the negativity within and around. Next. So that's all. Last PPT, na? Yeah. So that's my humble request that I am a student of Bhagavad Gita from the last 18 years. I came in contact with ISKCON in the year 2006, December. Already we are running in 2026. So I found that this teaching is the teachings of these Bhagavad Gitas are very important. That's why I address these teachings in easy to understandable way, not only to students, not only to teachers, not only to the corporate, but also to the various sections of the society, as Hardik Prabhu told in the beginning, that even to the police department, the administrative department, taking the topic of stress management, I try to make them understand how their life will be stress free if they include the concepts of Bhagavad Gita in their life, and how by uh, discovering our inner nature, how by understanding the three modes of material nature, how by understanding that mind is cheating us and we have to act intelligently. Intelligence should control the mind, not vice versa. So in that way, we can uh, develop our higher consciousness and can be betterly situated even while living in this world. है So if you have any questions, you're most welcome. So it was just like the basics. In the coming two sessions, even more things will be discussed, more relevant things will be discussed tomorrow and day after. So if you have anything, any questions related to this session or live, then you're most welcome. Hare Krishna. Thank you